दीदी जी सादत प्रणाम दीदी जी। हाँ दीदी आपका लाइक मिल गया है। दीदी जी सादत प्रणाम दीदी जी। हाँ दीदी आपका लाइक मिल गया है। दीदी जी सादत प्रणाम दीदी जी। थैंक यू दीदी जी। दीदी जी दो दो आईडी से आ गई हैं। थैंक यू दीदी जी। धन्यवाद दीदी जी। हाँ दीदी जी तीनों से मिल गया है दीदी जी लाइक। और मोबाइल न ले लेगा। थैंक यू बहन, थैंक यू मंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मंजू बहन धन्यवाद। धन्यवाद मंजू बहन। चलते हैं ऊपर। अरे यहाँ पे गर्मी छूटती है। आलू खाए इधर पंखा चलिए आ जाओ नहीं। तेरा सब तरी है झूर या भीजी है पता नहीं गद्दा ले आई तो गद्दा भीज है अरे झूर आ दरी उड़ा देते। आ जाओ लाइट आ गई। लाइट की कोनो भरोसा नहीं। अरे पानी बटे का बजे कोनो भरोसा नहीं। थैंक यू दीदी जी। मेरे यहाँ लाइट आ जा रही है। राम राम मंजू बहन राम राम। इंदु दीदी राम राम, मंजू बहन राम राम।
थैंक यू दीदी जी, धन्यवाद रमो दीदी, धन्यवाद मंजू बहन, धन्यवाद धन्यवाद मंजू बहन। ममता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हाँ दीदी 8-16 पर आई हैं, देख रही हैं। सिस्टर दूसरे फोन में नेट चल रहा है, आ जाओ दीदी, आ जाओ, दोनों से आ जाओ। ममता दीदी दोनों से आ जाओ, जल्दी हो जाएगा आपको। काजल बहन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद काजल बहन। हाँ दीदी जी आ जाइए दोनों से। धन्यवाद काजल बहन। धन्यवाद काजल बहन, धन्यवाद, थैंक यू काजल बहन। काजल बहन हमारी खूब बड़ी बड़ी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। जय माता दी बहन, जय माता दी। थैंक यू काजल बहन, थैंक यू मंजू बहन, थैंक यू ममता दीदी। खुश रहो, आनंद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा सुहागन रहो मेरी प्यारी बहन। रुको दीदी, दे रहे हैं ब्लू, दे रहे हैं दीदी। मीनू बहन खुश रहो, आनंद रहो बहन, सदा सुहागन रहो मेरी प्यारी बहन। हो गया दीदी जी। ठीक है, ठीक दीदी। मीनू बहन हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई हैं मेरी मीनू बहन।
काजल बहन भी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं, मीनू बहन भी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं, मंजू बहन भी बनी हुई हैं, रम्मू दीदी भी हैं, रम्मू दीदी, ममता दीदी, मंजू बहन, काजल बहन, मीनू बहन, मेरी सभी बहनें मेरे सपोर्ट में हैं। धन्यवाद मेरी सभी बहनों का, धन्यवाद। आज मैं एक कृष्ण भगवान का रास लीला कजरी गीत डाली हूँ। दीदी जी सादर प्रणाम। इंदु दीदी जी 8/22 पर आई हैं। हाँ दीदी जी। दीदी आज मैं अचानक से आपकी लाइफ से मुझे आना पड़ा। इंदु दीदी आज मैं अचानक से आपकी लाइफ से आ गई। मेरे पति देव आए और गुस्सा होने लगे, लाइव में बैठी थी तो इसीलिए मैं फट कुछ कुछ नहीं बोली, खाली बाय बाय का सिंबल भेज के आ गई वापस। मुझे ये भी नहीं पता मैं आपको कितना समय दी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतरा बहन। सभी भाई बहन को राधे राधे, राम जय श्री राम, हर हर महादेव। संतरा बहन हमारी बोल रही हैं। और ये कौन बहन है? शिवम शुक्ला। खुश रहो मेरे प्यारे भाई, जय श्री राम जय श्री राम। सदा सुखी रहो मेरे भाई, जहाँ भी रहो। खूब कमाओ, खूब तरक्की करो मेरे प्यारे भाई। शिवम भैया लाइक डन कर दिए हो? संतरा बहन हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे जय श्री राम बोल रही हैं। मीनू बहन हमारी मोजी के साथ बनी हुई है। अच्छा इंदू दीदी को ब्लू दे दूं? इंदू दीदी ब्लू दे दूं इस पर भी आपको? इंदु दीदी जी आपके पास जितना समय हो, 1 घंटे 2 घंटे आप मुझे दे देना, मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगी। मुझे नहीं पता मैं आज कितना समय तक थी आपकी लाइव में। क्योंकि मैं अचानक से जो है तीनों मोबाइल फटाफट बंद करके आ गई थी। उन्होंने बोला बहन कि एक ही आईडी से जाती हो तो क्या वॉच टाइम मिलता है? हाँ दीदी मिलता, हाँ संतरा बहन मुझे तो मिलता है, मिलता है, बढ़िया मिलता है। और संतरा बहन जब दोनों लगाती थी ना तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो ये मेरा वॉच टाइम कटने वाला मैटर था, मैं क्या की थी मतलब पूरे में वीडियो की जगह बस लाइव 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 दिखता था, तो मैं सारी जितनी लाइव वाली वीडियो थी सब मैं प्राइवेट कर दी थी। और जब मैं प्राइवेट कर दी तो वही मेरा सारा वॉच टाइम कट गया था, और कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो अचानक से मैं एक दिन, जब अभी 15 दिन नहीं थी तो उसमें एक दिन मैं एक वीडियो की थी, मतलब पब्लिक कर दी थी एक क्या नाम से, मतलब ये लाइव वाला।
एक वीडियो मैं पब्लिक की, तो उसके 5वें दिन मुझे 40 घंटे की वॉचिंग मिल गई। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इस टाइम मैं ना वीडियो डाल रही हूँ, ना मैं लाइव कर रही हूँ, ये 40 घंटे की वॉचिंग मुझे मिली कहाँ से। तब मैं कल ढेर सारी वीडियो कर दी, तो आज मुझे बहुत ढेर सारा मतलब मिल गया। जितना वीडियो मैं की थी सारी वीडियो को जुड़ के आ गया है। तो अब मुझे पता चला कि ये जो वॉच टाइम कट रहा है, जो पब्लिक मतलब प्राइवेट कर देते हैं हम लोग वीडियो, वीडियो प्राइवेट नहीं करना चाहिए। मैं लाइव को प्राइवेट कर देती हूँ, वही मेरा वॉच टाइम कट रहा था। तो आप सभी बहनों ने मेरी बातें सुनी कि नहीं सुनी? देखो इतनी सारी बहनों का जो है कमेंट आ रहा है। जय अम्बे बहन की बात सुनकर मुझे बहुत टेंशन हो गया है मेरी बहन। अच्छा, क्या हुआ मैं नहीं समझी। अच्छा, दीदी बोल रही हैं आप लोग जितना मेरा सपोर्ट करोगी उतना ही वॉच टाइम बढ़ेगा ना मेरी बहन। हाँ दीदी, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही बढ़ेगा। संतरा बहन, जितना सपोर्ट करेंगे बस उतना ही बढ़ेगा। क्या हुआ जय अम्बे बहन ने, क्या कोई घोटाला हो गया क्या? कल तो कुछ मैटर हुआ था ना कि एक दो चार कमेंट यहाँ दो चार कमेंट वहां वाला। क्या बोली थी संतरा बहन, क्या बोली थी जय अम्बे बहन? देखो मैं बता रही हूँ संतरा बहन, यहाँ वहाँ की ढेर सारी बातें में नहीं पड़ना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें रहती हैं। और मैं जितनी भी बात बोलती हूँ प्रैक्टिकली बोलती हूँ, जो प्रैक्टिकल करती हूँ वही बात बोलती हूँ। जैसे मेरा सारा वॉच टाइम कट गया था एक दिन में अचानक से, बस वैसे एक जो है लाइव जाने में अनजाने में कैसे भी पब्लिक हो गई थी। और पब्लिक हुई तो मुझे 40 घंटे की वॉचिंग मिली। तो मैं सोच रही थी ये मुझे मिली तो कहाँ से मिली। अगर मेरी लाइव चलती होती, मैं वीडियो डालती तो मैं न समझ पाती। लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, मैं 10-15 दिन न लाइव की थी न वीडियो डाली थी। तो उसके बाद मैं अभी कल जो है ढेर सारी वीडियो पब्लिक की। और मैं कल जितनी वीडियो पब्लिक की थी मुझे सब पूरा आज पूरे का रिस्पॉन्स मिला है। अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं अपना पूरा पब्लिक कर दूंगी। मुझे लगता था कि सब लोग देखेंगे तो कहेंगे ये क्या राम राम बहन बहन भैया भैया कर रही हैं। इसी वजह से मैं सब पूरा प्राइवेट कर दी थी। और वही प्राइवेट करने की वजह से मेरा सारा वॉच टाइम कट गया था। अब देखो इतने लोगों का कमेंट आ रहा है, लेकिन वाचिंग जो है वाचिंग 2 शो कर रहा है। थैंक यू मीनू बहन, धन्यवाद। मीनू बहन हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। शिवम भैया भी हमारे आ गए हैं। और काजल बहन भी हैं मेरी। यदुवंशी संतरा बहन भी सपोर्ट कर रही हैं। मंजू बहन चली गई क्या? मंजू बहन का कमेंट नहीं आ रहा है। मंजू बहन आपका कमेंट नहीं आ रहा है, आपका क्लिकर रुक गया है क्या बहन? इंदू दीदी भी हैं। पूनम बहन बात नहीं रही हो। पूनम बहन बता नहीं रही हो, ऐसा होता है क्या? रात में ऑन करके रखने से चैनल बंद हो जाता है? दीदी मुझे नहीं पता है, रम्मू दीदी उस दिन बताई थी, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। मैं कल भी पूरा ही रात रखी थी दीदी। लेकिन मेरा एक अनुभव है कि लाइव आने के बाद दीदी शायद व्यूज आना कम हो जाता है। संतरा बहन देखो आईडी अपनी बनाई और ये डालना शुरू की, 2 ही महीने में इनको अच्छा मतलब रिस्पांस मिला था, इनके व्यूज अच्छे आए थे वीडियो पर। और जब से लाइव आना शुरू कर दी तब से इनके उसमें भी नहीं आ रहे हैं व्यूज। मैं अपने में भी देखी हूँ, मेरे में तो 19,000 3500 4,000 ऐसे ऐसे व्यूज आए हैं। नवंबर में मेरी जितनी भी वीडियो मैं नवंबर में डाली थी दीदी, एक में 19,000 आया था और कुछ में 5,000 4,000।
3500 ऐसे व्यूज आ रहे थे। लेकिन यही कहीं से मुझसे गलती हुई, मैं लाइव वाइव शुरू कर दी। लाइव शुरू करने के बाद सब सिस्टम में गड़बड़ हो गया। लाइव जब तक नहीं आ रही थी बहुत बढ़िया व्यूज आ रहा था। और जबकि मैं लाइव शुरू की थी तब मैं व्यूज के लिए नहीं की थी, वॉच टाइम के लिए नहीं की थी। वॉच टाइम के लिए तो मैं जून की से, हाँ जून से शुरू की थी। इंदु दीदी मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में, इसलिए बहन मैं अपने तीनों मोबाइल में अलग अलग आईडी बना ली हूँ कि किसी को विश्वास नहीं होगा लाइव में देखने पर। हाँ दीदी, मेरे में एक एक जितनी भी आईडी है सब सारे मोबाइल में पड़ी हैं। अभी मेरे लड़के का जब मोबाइल खराब पड़ा था, अभी तक जब तक तब तक उसकी भी आईडी मेरे मोबाइल में थी। वो वाला मोबाइल ठीक करवा ली, दिवाकर त्रिपाठी वाला जो है, तो उसकी आईडी निकलवा दी उसी से। मैं तो कुछ कर नहीं पाती, लड़के से ही सब करवाती हूँ। नहीं तो अभी तक तो 3-4 आईडी पड़ी थी मेरे मोबाइल में। और मेरे लड़के वाले में भी 3-4 पड़ी हैं। पति देव वाले में खाली एक आईडी है। लेकिन मेरे माँ बेटे दोनों में तो बहुत ढेर सारी आईडी थी। आज मैं एक बहुत पुराने जमाने वाला कजरी गीत डाली हूँ, अब उस राग में गाया ही नहीं जाता। मेरी मम्मी नानी की जमाने वाली कजरी डाली हूँ। इंदु अरे वो दीदी ममता दीदी आप तो सुनी है। और वही पुराने जमाने वाली राग में भी गाई हूँ। सिर पर मटकिया धई के ग्वालिन पुकारे, आबे के उले दहिया हमारे हो। अपनी महले से कन्हैया पुकारे, ग्वालिन हमें ले दहिया। आप तो रात में रखती हो ऑन करके न अपना। हाँ दीदी मैं कल रखी थी सुबह 4 बजे तक। परसों जो है मेरी मोबाइल अपने आप से स्विच ऑफ हो गई थी 11 बजे 12 बजे, मुझे पता नहीं। मैं 10 साढ़े 10 बजे बस मोबाइल रखी और सो गई थी, तो मुझे पता नहीं चला मेरी मोबाइल कब स्विच ऑफ हो गई। मैं बैटरी भी नहीं देखी थी। और कल दीदी, कल मैं सोची थी 12 बजे बंद करने को, लेकिन कल भी वही हुआ, मैं 12 बजे पहले सो गई तो मेरी मोबाइल सुबह 4 बजे तक चलती रही। आजकल दिन में तो आराम करने को सोने को मिलता नहीं, तो इसी वजह से। अच्छा दीदी, हाँ सुना रहे, वो इंदु दीदी से बात करने लग गई थी। अब आजकल, हाँ दीदी जो है, रमू दीदी इंदु दीदी आप सबको तो ये वाली राग पता होगी, क्योंकि आप लोगों के मम्मी के जमाने की होगी ये। आप सब तो भी मुझसे भी बड़ी हैं, मेरे ही एज की हैं। अभी जब वो मेरी नानी खत्म हुई थी तो जब गई थी तो मौसी बताई थी ये वाला।
उन्हीं से सीख कर आई थी, पूरा सावन बीत गया नहीं डाली, आज डाली हूँ। हम सोचे आज भगवान कृष्ण का वो चल रहा है ना जन्मोत्सव, तो वही रास लीला कजरी गीत डाली हूँ। सिर पर मटकिया धई के ग्वालिन पुकारे, आबे के उले दहिया हमारे हो। अपनी महले से कन्हैया पुकारे, ग्वालिन हमें ले बदहिया तो हारे हो। ग्वालिन हमें ले बदहिया तो हार, हमारी दहिया का तो ले ब्याहो कान्हा, कान्हा आधी मछिया आधा बारे हो। कान्हा आधी मछिया आधा बारे, तोहरी दहिया हमें ले बई हो। ग्वालिन रे आधी मछिया आधा बारे हो। ग्वालिन आधी मछिया आधा बारे, जो तूले ब्या कान्हा मेरी दहिया, कान्हा तोड़ो कदम कई पाते हो। कान्हा तोड़ो कदम कई पाते, जब तक कन्हैया जी दुनिया बनवे, आबे ग्वालिन नी करी गाई पारे हो। आबे ग्वालिन नी करी गाई पारे हो। तू तब ठग्यो ग्वालिन दिने दोपहरिया, ग्वालिन हमाहू छलबे आधी राते हो। तू तो छल्यो ग्वालिन दिने दोपहरिया, ग्वालिन हमाहू छलबे आधी राते हो। 16 सिंगार कई के निकले कन्हैया, आबे कानौनी करी गए पारे। एक बन गए हैं दूसरे बाने, आबे तीसरे माँ ग्वालिन के देश हो। कान्हा तीसरे माँ ग्वालिन के देश, अंगनिया की तू भीतरे हो बहिनी, अरे बहिनी दुअरे वापर ठाड़े हो। बहिनी बहिनी दुअरे वापर ठाड़े हो। अपने पपैया जी के मैं तो अकेली, बहिनी बहिनी कहाँ से आई हो। आबे बहिनी कहाँ से आई हो। जब तो भय बहिनी तोहरा बियावा, बहिनी तबई भाई जनम हमारे। ओ तू तो बियाह कई के गयो है ससुरे, बहिनी तबई भाई जनम हमारे हो। बहिनी बहिनी कई के भेंटाने लागे, अब कान्हा भाई हैं भेंट नारे हो। बहिनी बहिनी कई के जेवाने लागे,
अबे कान्हा भाई हैं जेऊ नारे हो, बहिनी बहिनी कई के सोवाने लगे। अबे खुली गाई कान्हा के पोले हो, बहिनी बहिनी कई के सोवाने लगे। अबे खुली गाई कान्हा के पोले हो, तू तब छल्यू ग्वालिन दिने दोपहरिया। ग्वालिन हमहू छले है आधी राते हो, ग्वालिन हमहू छले है आधी राते हो। संतरा बहन, मंजू बहन, इंदू दीदी और रमो दीदी, आप सब ये वाला गीत सुनी है कि नहीं सुनी है अपने बचपन में? अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप ही का वेट कर रही थी कि अभी भैया हमारे नहीं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप आए। लेकिन काजल बहन, आपको मेरे ये सब गीत ना समझ में आते होंगे ना? काजल बहन कमेंट करके बताओ, ये सारे गीत समझ में आते हैं आपको? मंजू बहन को, संतरा बहन को और रमो दीदी को, इंदू दीदी को, इन लोगों को तो समझ में आते होंगे। हम सब लोग एक ही एरिया के हैं। यूपी के पूर्वांचल से ही हैं हम लोग। बहुत बढ़िया सुनाया है तुमने, लेकिन हम पहली बार सुने हैं। अच्छा दीदी, आप पहली बार? दीदी ये मतलब मेरी मौसी मुझे बताई थी, अभी जब मेरी नानी की डेथ हुई थी, मैं गई थी वहाँ मामा के यहाँ। और मम्मी मम्मी मौसी लोग मेरी नानी से सीखी थी, मतलब बहुत पुराने जमाने का हम लोग, मतलब मैं भी कभी सुनी नहीं थी, बस वो मुझे बताई थी और इसी आवाज में बताई थी। जबकि मैं अगर इसको डालना चाहती तो जो आजकल कजरी गाई जाती है इस आवाज में भी बना के डाल सकती थी, जैसे इसको ऐसे भी डाल सकती थी। जैसे अब ये जो आजकल मतलब कजरी वाली आवाज है, ऐसे भी डाल सकती थी। सिर पर मटकिया धई के ग्वालिन पुकारे, केहू ले दहिया हमारी ना। अपनी महल से कन्हैया पुकारे। क्या बताए, मैं 3 ही सुनी थी ये गीत बहन आपका, और फुल आवाज भी किया है लाइक के साथ। अच्छा अच्छा दीदी, आप 3 बजे फुल आवाज के बाद सुनी है? अच्छा दीदी, वो तो ममता दीदी को तो देखी थी, उनका कमेंट आया था। अब मैं 3 बजे के बाद दीदी मोबाइल नहीं छुई थी, मतलब मोबाइल छुई थी, चैनल पर नहीं गई थी, कमेंट नहीं देखी थी। ममता दीदी का तो देखी थी, जैसे मैं डाली थी तुरंत ही ममता दीदी की सुनी थी, उनका कमेंट देखी थी। ये पूछ रहे हो कि इंदु दीदी, इस वाली आवाज में गाना आपके समय में होता था कि नहीं आपके बचपन में? मतलब इस आवाज में आप गाना सुनी है कि नहीं सुनी है पहले? झूला उला झूलने में ये सब गाना पहले गाया जाता था। और अब यही सब गीत सब वही है, बस राग अकेले बदल दी गई है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू मेरे प्यारे भाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। नमो दीदी, बड़ी अम्मा हमारी गाती रही होंगी बहन, लेकिन सुना पहली बार है आपका के मुंह से। अच्छा अच्छा दीदी, नहीं मैं तो सुनी हूँ दीदी। मेरे बचपन में मेरी एक दादी थी, दादी थी लेकिन
तो वो झूला झूलती थी और गाती थी, तो वो इसी तरह के गाने गाती थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। और वो बहुत गाती थी। मेरे घर के बगल की दादी हैं, वो बहुत गाना गाती थी, लेकिन अब कुछ याद नहीं है, बचपन की बातें हैं सब। बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है मेरी प्यारी बड़ी दीदी जी, हम गा रहे हैं जी दीदी जी। अच्छा, इतनी जल्दी चले गए भैया आज आप? बढ़िया सुनाया है। अच्छा, मंजू बहन चली गई। इतना सुंदर गाना गा रही है। इस गाने को वीडियो पर डाल देना, हम सुनेंगे जरूर। अरे मंजू बहन, वीडियो पर डाल दी हूँ, आज ही डाली हूँ, तभी तो सुना रही हूँ। आज डाली हूँ बहन, तुम्हारी लाइफ से जाने के बाद डाली थी। जैसे कन्हैया पुकारे ग्वालिन, लबे हमारी बातें हो। तू कब छल्यो ग्वालिन, दिने दुपहरिया ग्वालिन, हम चलबे आधी रात हो ग्वालिन, हम चलबे आधी रात हो। काजल बहन के भजन बहुत अच्छी अच्छी रहा थी, हम रोज सोचे थे लेकिन जा नहीं पाए। बहुत दिन से सोचत रहे कि राधा कृष्ण के ज्यादा भजन रहा थी। जन्माष्टमी पहले लिख लेवे, लिख के डाले बरे, लेकिन ये लाइफ के चक्कर में समय नहीं मिल पाओ चैनल पर जाए के बरे। जबकि हम लाइव नहीं आते रहे, उससे पहले रोज जात रहे हैं। उनका भजन अच्छी लागत रहे बरे। नोटिफिकेशन जैसे आवे, नोटिफिकेशन हम रोज चेक करत रहे हैं। और सब एक से बढ़ के एक अच्छी अच्छी सारी भजन रहा थी। हम बहन कितना समय दिया था, बता दो मेरी। अरे दीदी, मैं अचानक से आई थी। मोबाइल में तीनों लगाई थी दीदी, लेकिन मैं अचानक से, मेरे पति देव आ गए और वो गुस्सा होने लग गए थे, तो मैं फटाफट तीनों मोबाइल से बाय बाय का सिंबल भेज के और निकल आई थी। न न कोई नमस्कार, न चमत्कार, न दुआ, न सलामी, कुछ नहीं। मैं फटाफट, मैं सोची ऐसा ना हो नहीं मेरा मोबाइल फोड़ दिया जाए। मैं डर के मारा कुछ भी नहीं बोली, फटाफट फटाफट तीनों मोबाइल से बाय बाय का सिंबल भेज के उसके बाद निकल गई थी। न टाइम देखी थी दीदी, न कुछ देखी थी। दीदी आप चाहे जितना दे दो, कोई मुझे वो नहीं है। अरे दीदी, उनका कोई टाइम नहीं है। उनका साइट का काम रहता है
किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है तो देर से आ जाते हैं। आप चाहे जितना कर दो दीदी, कोई वो नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा चाहे जितना दे दो। आप ज़्यादा दे दोगे दीदी, मैं कल आपको रिटर्न कर दूँगी, अगर आपके पास समय हो तो। इंदु दीदी, मैं कल तीनों लगा के ज़्यादा समय दे दूँगी आपको। कोई बात नहीं दीदी, मैं अचानक से बता रही हूँ ना कि मैं देखी नहीं, टाइम वाइम नहीं देखी, आए गुस्सा होने लगे कि जब देखो तब यही मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मैं फटाफट, मैं वो तो मैं जल्दी जल्दी बाय बाय भेज दी कि दीदी को ये ना लगे कि मैं अचानक से चली गई। और नहीं तो ना प्रणाम की आपसे, ना नमस्कार, ना चमत्कार, ना कोई दुआ, ना सलामी, बस फटाफट। मैं ये सोची कहीं ऐसा ना हो मेरा मोबाइल वोबाइल भैया तोड़ ओड़ दिया जाए। मैं इसी डर के मारा कुछ भी नहीं बोली, फटाक से फटाफट फटाफट तीनों मोबाइल से तीनों से भेजी कि एक से भेजी, मुझे ये भी नहीं पता है दीदी, गुस्सा होने लग गए थे ना। और फटाफट मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं रख दी थी। अगर आदमी लोग गुस्सा होने लगे दीदी तो उस समय चुपचाप रहना ही में ही समझदारी रहती है। अगर अपना नुकसान ना करवाना हो तो अपना चुपचाप मुंह बंद कर लो बस। और मुंह खुला तो फिर नुकसान होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात, इनका दिन भर का आना जाना रहता है। बीच में आ जाते हैं 1-2 घंटे लंच टाइम में, उस समय संतरा बहन की लाइव चलती रहती है, मंजू बहन की। उसमें तो मैं पहले से ही बता दी हूँ, मंजू बहन को भी, संतरा बहन को आवाज बंद करके रख देती हूँ। दुर्घटना से देर भली। दीदी आपके पास जितना समय हो आप उतना दे दो, मैं कल आपके लाइव में फिर आके दे दूंगी समय। जैसे संतरा बहन का और मेरा तो ऐसा हिसाब है ना, उनकी कोई गिनती है वो कितना समय दे दी, ना मेरी कोई गिनती है। उनके पास जितना समय रहता है वो दे देती है, मेरे पास जितना समय रहता है मैं दे देती हूँ। पूरी पूरी रात अपनी मोबाइल लगा देती हैं, बहुत सपोर्ट कर रही हैं संतरा बहन इस समय मेरा, जब से मेरा कटना शुरू हुआ है।
पूनम सिस्टर फुल नाइट लाइव आती हो क्या? दीदी परसों जो है नरसों बताई थी, रमो परसों ही बताई थी। परसों रमो दीदी हमसे बताई थी तो मैं सोची थी 12 बजे तक कर दूंगी। तो उस दिन मैं मतलब 10 बजे के बाद, जैसे आप सबके जाने के बाद मेरी लाइफ में कोई आता नहीं तो मैं लेटी और सो गई। तो 11 बजे 12 बजे पता नहीं कब मेरी लाइफ बंद हो गई थी। संतरा बहन मुझसे बताई थी जब वो अपनी लाइफ बंद की थी तो मेरी लाइफ बंद हो चुकी थी। बताए कि बीच में बहन मैं देखी तो आपकी लाइफ बंद हो गई थी। और कल दीदी, कल भी मैं सो गई तो मैं मोबाइल चार्जिंग में लगाई थी तो मेरी, मैं 12 बजे बंद करने क्या खोलूं। सुबह जब 4 बजे मेरी नींद खुली तो मोबाइल चल ही रही थी तो कल पूरी रात चली। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई है दीदी। और दीदी ये बताइए, आप लोग अपना लाइफ प्राइवेट तो नहीं करती हैं? क्या बोल रही थी वो फुल नाइट करने से कोई डर? हाँ हाँ, यही बोल रही थी कि मतलब कई लोगों का जैसे चैनल ब्लॉक कर दिया गया, यूट्यूब ने चैनल ब्लॉक कर दिया पूरी पूरी रात चलाने से। किसी का सुनी होंगी दीदी, कई लोगों का तो चैनल ब्लॉक, मैं भी सुनी हूँ कि चैनल ब्लॉक हो गया है। एकदम वो मोनो होने वाला था तो चैनल ही गायब कर दिया गया, इस तरह की बातें तो मैं भी सुनी हूँ। लेकिन अब कोई आए मतलब सामने से बताए कि मेरा चैनल ब्लॉक हो गया तब तो समझ में आता है। नहीं तो इसमें तो शुरू शुरू में देखो कहते थे कि इमोजी मत दो, ये न करो वो न करो, जितने मुंह उतनी बातें रहती हैं। लाइव प्राइवेट करोगी तो फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। हाँ दीदी, वही तो दीदी, मेरा जितना मैं पूरा प्राइवेट कर दी थी ना तो वही मेरा वॉच टाइम कट गया था सब। म्यूट लाइव कर सकते हैं दिन में? अच्छा, दिन में कर सकते हैं। दीदी हमको कुछ किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। हम ही को नहीं, सभी को, हमको लगता है बस ऐसे। सादर प्रणाम दीदी जी, गुड नाइट दीदी जी। गुड नाइट दीदी जी, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। रमो दीदी का भी देखो, मैं सुबह अपना मोबाइल लगा के रख देती हूँ, कोई काउंटिंग नहीं रहती कि कितने बजे से कितने बजे तक लगाई। और दीदी भी, इनके पास 3 4 आईडी हैं, सारी मोबाइल लगा देती हैं। आपसे पूछ रही हूँ, म्यूट लाइफ में कोई डर तो नहीं है क्या? दीदी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मुझे अगर कोई जो मतलब आप ये सोच लीजिए कि मैं अपनी सारी जितनी भी मेरी लाइफ थी मैं उसको प्राइवेट कर दी थी, जानकारी ना होने की। वो तो अचानक से मैं एक दिन एक लाइव को पब्लिक की, जिस टाइम मेरी तबीयत खराब चल रही थी, और उसका वॉच टाइम मुझे मिला तो मैं कंफ्यूज थी कि ना मैं लाइव आ रही हूँ ना मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो मुझे ये वॉच टाइम मिला कहाँ से? तो फिर मैं अपनी, कल मैं अपनी कई जो है पब्लिक की थी कई वीडियो, फिर थोड़ा सा इधर करिए। कल मैं अपनी कई लाइव को पब्लिक की, जो जितनी लाइव पब्लिक की थी उसका वॉच टाइम मुझे आज मिल गया। तो उसी से मुझे पता चला ये बात, नहीं तो मैं तो ये भी नहीं जानती थी पब्लिक और प्राइवेट वाली की बात। वीडियो तो जानती थी कि वीडियो पब्लिक नहीं करोगी तो नहीं कुछ होगा, लेकिन इसको मैं प्राइवेट कर देती थी। मुझे कुछ जानकारी नहीं है दीदी। कोई बात
कोई भी लाइव वीडियो देख करोगे तो उसका वॉच टाइम नहीं बनेगा। हाँ दीदी, अब तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं वही बात बताती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। अब जैसे मैं सब पूरा प्राइवेट कर दी थी तो वही मेरी, मैं जो बहुत परेशान थी, मेरा सारा वॉच टाइम कटा था। जब मैं सारे लाइव अपनी पूरी लाइव प्राइवेट कर दी तो जो मेरी लाइव का वॉच टाइम जुड़ा था वही मुझे लगता है वही कट गया था। और कल जब मतलब उस दिन अचानक से दीदी एक मतलब वो ऐसे पता नहीं कैसे एक वही सीख रही थी कि क्या कर रही थी मैं, एक वीडियो वही पूरी रात वाली 10 घंटे की थी, मैं उसको पब्लिक कर दी। जाने में अनजाने में क्या की कैसे की, लेकिन पब्लिक कर दी थी। और उसके बाद जब उसका वॉच टाइम मुझे मिला तो मैं वही सोच रही थी कि मैं ना वीडियो डाल रही हूँ ना लाइव आ रही हूँ, मुझे इतना वॉच टाइम मिला तो कहाँ से मिला। वहीं से मेरा दिमाग खुल गया। मैं जितनी और जो वीडियो थी उसको जब मैं प्राइवेट मतलब पब्लिक की तो उसका वॉच टाइम मिला। अब मैं सोच रही हूँ, अच्छा ये बताओ ममता दीदी, रम्मो दीदी, इंदू दीदी, संतरा बहन, जिसको भी जानकारी हो, काजल बहन, जिसको भी जानकारी हो, ये बताओ कि क्या एक ही दिन में जो मैं ढेर सारा पब्लिक कर रही हूँ इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी दीदी? ममता दीदी, एक ही दिन में मैं जैसे मैं ढेर सारी जो है पब्लिक कर दी हूँ, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ममता दीदी, इंदू दीदी, काजल बहन। रम्मू दीदी तो जा चुकी हैं। ममता दीदी, अगर आप लाइव में हो तो कमेंट करके बताओ। इंदु दीदी, आपको जानकारी हो तो बताओ, एक ही दिन में जो मैं ढेर सारा लाइव पब्लिक कर रही हूँ। काजल बहन, आपको जानकारी हो तो बताइए, मैं एक ही दिन में ढेर सारा आज मतलब जैसे पब्लिक की हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं अपनी लाइव प्राइवेट की थी, उसको पब्लिक कर दी हूँ और ढेर सारी लाइव को आज पब्लिक की हूँ, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एक ही दिन में जो ढेर सारी की हूँ, कोई लिमिट हो 1 2 3 तो 1 2 3 करके धीरे धीरे करूँ, इसी वजह से मैं पूरा नहीं की हूँ। ममता दीदी हमको लगता है जा चुकी हैं। ममता दीदी के लाइव का समय हो गया होगा। अच्छा, हमारे समय नहीं होना चाहिए। पहले चैनल में मैं भी बहुत प्राइवेट होती थी, एक ही दिन में कई लाइन में ऑन किया था, उसका जोड़कर मुझे 3400 वॉच टाइम मिला था। अच्छा अच्छा दीदी, हाँ वही चीज़ आज मुझे खुद ही दीदी जो है, कल मेरा था, पता नहीं ये सब बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए लाइव में। कल मेरा था दीदी 2602 घंटे, और आज जब मैं देखी तो मेरा 2820 हो गया था। मतलब मैं कल जितने खोली थी वो सब आज जुड़ के आ गए 24 घंटे के अंदर। और आज जो खोली हूँ उसको देखो कल मिलता है कि नहीं मिलता। और उसमें दीदी मेरी कई लाइव में मैं देखी थी कॉपीराइट भी लगा है। जब मैं आज पब्लिक कर रही थी तो 2 3 में उसको क्या करूँ, उसको प्राइवेट कर दूँ क्या? ममता दीदी, ममता दीदी, इंदू दीदी, काजल बहन, बताओ। कई में
देख लो 2-3 करके पब्लिक कर दो, एक ही साथ मत करो। हमारे भी 3 पहले कॉपीराइट आया है लाइव में बहन, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा दीदी, हाँ दीदी वही मैं देख रही तो 2 में मुझे दिखा था कॉपीराइट। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, आपका स्वागत है, वेलकम है अंशिका बहन। धन्यवाद बहन अंशिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा क्या पूनम दीदी? नहीं बहन, बोल तो रही हूँ। अच्छा नाम नहीं ली, बस खाली बहन बहन करके बोल दी ना, इसी से नहीं समझ में आया। अंशिका बहन तुम्ही को बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, जो बोली थी ना तुम्ही को बोली थी। अंशिका बहन तुम्ही से बात कर रही हूँ। अंशिका बहन हमारे ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। ममता दीदी भी हैं, इंदु दीदी भी हैं, संतरा बहन भी हैं और मेरी काजल बहन भी हैं। मेरी सभी बहनों का ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इंदु दीदी धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद, काजल बहन धन्यवाद, मीनू बहन अगर लाइव में हो तो आपको भी धन्यवाद। आपको भोज दिया कहाँ यार, ज्योतिष का भी तो लगा दी थी किसी ने। हाँ दीदी, ममता दीदी आपका कमेंट आ रहा है, आ रहा है ममता दीदी। अंशिका बहन का आ रहा है।
अंशिका बहन का आ रहा है, ममता दीदी का आ रहा है, और संतरा बहन का आ रहा है, इंदू दीदी का आ रहा है। काजल बहन का इस समय नहीं आ रहा है। रमो दीदी जा ही चुकी हैं। अंशिका बहन धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद, इंदू दीदी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, काजल बहन धन्यवाद, मीनू बहन धन्यवाद। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ममता दीदी आपका आ रहा है कमेंट। इंदू दीदी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, अंशिका सिस्टर धन्यवाद, संतरा सिस्टर धन्यवाद। इंदू दीदी धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद,
इंदु दीदी धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, हंसिका बहन धन्यवाद, मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इंदु दीदी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद, काजल बहन धन्यवाद, मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु दीदी धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद। और 15 पर आई थी बहन, चलती हूँ लाइव। ठीक है दीदी, ठीक ठीक है दीदी। सादर प्रणाम दीदी जी, ममता दीदी जी सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू अंशिका बहन, थैंक यू अंशिका बहन, थैंक यू, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। संतरा बहन धन्यवाद, इंदु दीदी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद इंदु दीदी जी, धन्यवाद।
संतरा बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद, इंदू दीदी धन्यवाद। इंदू दीदी हमारी दो आईडी सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है दीदी, ठीक ठीक दीदी। सादर प्रणाम दीदी जी, शुभ रात्रि। इंदू दीदी जी शुभ रात्रि, सादर प्रणाम, बाय बाय दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, लाइक डन कर दो। अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव में आए। हाँ लाइक डन हो गया भैया, थैंक यू भैया जी। थैंक यू भैया जी। अंशिका बहन धन्यवाद। भैया का मैं नाम भी भूल गई, अजय कुमार। थैंक यू अजय भैया। संतरा बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद, अजय भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे थोड़ा टाइम निकाल के आ जाया करो भैया, बस लाइक ही दे दिया करो रोज।
मेरे सभी भाई ड्यूटी करते रहते हैं, भाइयों की एक लाइक ही बहुत बड़ी, बहुत कीमती है। थैंक यू मेरी बहन, प्यारी बहन अंशिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका बहन हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। संतरा बहन के लाइव का समय हो गया है। संतरा बहन तुम्हारी लाइव का समय हो गया है। संतरा बहन अगर कोई काम कर रही हो तो काम छोड़ो अब। संतरा बहन मेरी आवाज जा रही हो तो आपकी लाइव का समय हो गया है बहन। अपना मोबाइल हटा लो अब। संतरा बहन तुम्हारी लाइव का समय हो गया है। थैंक यू संतरा बहन। थैंक यू अंशिका बहन, थैंक यू संतरा बहन, थैंक यू। हमको लगता है भूल गई क्या। अरे कब से मैं आवाज दे रही हूँ बहन तुमको। संतरा बहन मैं बहुत देर से आवाज दे रही हूँ बहन, तुम्हारी लाइव का समय हो रहा है बहन, तुम्हारी लाइव का समय हो रहा है, मोबाइल हटा लो। कभी कभी क्या होता है किसी काम में लग जाओ तो फिर याद ही नहीं रहता है। मैं दूसरे मोबाइल में टाइम देख रही थी ना। थैंक यू अंशिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन अंशिका बहन, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बहन। ठीक है, ठीक 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 बहन। ठीक है संतरा बहन। धन्यवाद अंशिका बहन, धन्यवाद।
लाइक करती हूँ बहन। थैंक यू बहन, थैंक यू। अंशिका बहन थैंक यू। संतरा बहन थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। लाइक करती हूँ मेरी प्यारी बहन। मेरी लाइफ चल रही है, अब मैं जा रही हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यस भैया, रवि रवि जय श्री कृष्ण। मैं पेमेंट चुकाती हुई करती हूँ मेरी प्यारी बहन। खुश रहो मेरे प्यारे भाई। अब मैं जा रही हूँ भैया, मेरी लाइफ चल रही है, ब्लू मत दो। ब्लू मत दो भैया, मैं जा रही हूँ, मेरी लाइफ चल रही है।